is also the President and Chancellor of the Amity Group, Senior Vice President of Amity Education Group, Mr. Yuj Ramachandran, as well as Mr. Gaurav Gupta, Vice President, Amity Education Group. I, Sumedha Chaudhary, Assistant Professor, Amity School of Communication from Amity University, Jharkhand. Welcome our today's guest, Ms. Pratna Hazarika, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you so much, Sumedha. Ma'am is a multimedia sports journalist and consulting editor in the Sentinel, Guwahati. She's been a multimedia journalist for almost 22 years. She's an active member of AIPS, World Sports Press Association, a trainer and mentor for ABC, Australian Broadcasting Corporation, since 2017. Apart from welcoming ma'am, I also welcome our Honorable Pro-VC Sir, Dr. Ashok K. Srivastava Sir, our Dean Academic Sir, Professor Dr. Ajit Kumar Pandey Sir, our Registrar Sir, Mr. Prabhakar Tripathi, all the directors, HOIs, HODs, faculty members, students and others to our Samvad, the international guest lecture on sports journalism through podcasting. Now I would request our ASPO's HOI, Dr. Sapan Kumar Gupta, sir, to welcome ma'am and others. Sir, please. Good morning to all. Am I audible? Yes, sir. Good morning and namaskar, Pratna ma'am. Namaste. Good morning. So this is actually a great moment, a beautiful moment for all of us because of two reasons. The first is we are going to have a great session on a topic which people don't talk much about. Number two, we have a veteran like Pratna ma'am who we are not going to discuss anything about me as a person, not going to discuss anything about the podcasting. She's going to talk about this thing, but I'm sure this session will be a wonderful session. I told this thing to my students in the morning itself. Attend this, try to understand this, and believe me, media is such a big thing that it has something or the other to cater all age groups, all kind of population, and this podcasting is one of them. You being the young journalist, my dear students, you should adopt this, understand this, and of course you can make your career in this also. Again, thank you so much, Pratna ma'am, to be our guest, and I'm very hopeful this 1 hour session will be a great session for all our students. Thank you so much, ma'am. Over to Pratna ma'am. Many thank you so much to the entire community of, I would say, the Amity University, and to all the distinguished professors who have, taken up this initiative to get me a platform to kind of speak about my experience as a sports journalist, as a broadcaster, as a multimedia sports journalist. आप सभी को मेरा नमस्कार, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम बात करें स्पोर्ट्स के बारे में। और डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इज समथिंग व्हिच इज absolutely booming up, but we don't tend to talk a lot about it. So I feel, this is the time where we need to speak about sports journalism. We need to speak about the different communities available that can help you and your children, your students, to develop as their personality through sports journalism, through podcast. And this is the time where we Indians also need to think about sports in a broader perspective. I hope आपके स्टूडेंट्स जो है सभी से मैं कनेक्ट करना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स के बारे में अगर कुछ जहन में आते हैं तो what is that one thing that comes to your mind? This is a question to all the students. आप लोगों को जब स्पोर्ट्स के बारे में सुनाई देता है तो
ऐसा क्या चीज है जो आप लोगों को दिल तक छू जाते हैं? What is that one thing? Maybe a name, maybe an environment, maybe a match. What is that one thing? Can you please share it with me? Students, please Anyone answer, and ma'am. everyone can share. So Veda, we can start with you. Ma'am, let the students be. Students, Yes. please answer, ma'am. Let's Hello, make it ma'am. interactive. Yes, yes. मैम सबसे पहले तो दिमाग में जी बताइए। मैम सबसे पहले दिमाग में तो सिर्फ प्लेयर ही आते हैं। जी, कौन से प्लेयर, किसको आप पसंद करते हो? Who is your hero? मैम धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। All right, MS Dhoni, definitely, definitely the biggest name in Indian cricket, the biggest name in the history. And हम लोगों ने 12 साल की हिस्ट्री 2 अप्रैल को हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप धोनी वाज द स्टार, और जिन्होंने हमें दोबारा ये वर्ल्ड कप हम लोगों को जितवा के दिया और हमेशा के लिए एक हिस्ट्री बन गई, है ना? यस मैम। तो आप क्या करना चाहते हो स्पोर्ट्स में? How do you want to take yourself forward as a sports journalist, or why do you want to take up sports? है किसी के पास ये जवाब? मैम मेरे पास है। मैम हम प्रतीक सनुक्ता फ्रॉम एस्को डिपार्टमेंट। मैम मेरा Okay. बैकग्राउंड है मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स में, तो ये मेरे मेरे जो पूरा मेरा चाइल्डहुड है मैम ये वैसे कनेक्टेड है, और इसको हम अपना फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहेंगे, उसको कवरेज देना चाहेंगे। जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जो हमारे अचीवमेंट्स है, उसको बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे करना चाहेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के थ्रू। क्योंकि बहुत सारे हम ये सिनेरियो देखे हैं कि ज़्यादातर क्रिकेट को ही अटेंशन मिल रहा है, बाकी स्पोर्ट्स को ठीक से अटेंशन ही नहीं मिल रहा है। जैसे टेनिस, कबड्डी, खो खो, जी। ये सारे स्पोर्ट्स को भी अटेंशन नहीं मिल रहा है, और खासकर मार्शल आर्ट वालों, क्योंकि मैम हम मार्शल आर्ट खुद खेले हैं नेशनल लेवल तक, और हम बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता है, किस तरह से हमें प्रॉब्लम्स होती है, किस तरह से हमें अचीवमेंट्स होती है, किसी को पता ही नहीं चलता है। तो हम वो दिखाना चाहेंगे मैम, कितनी मेहनत से हम लोग जरूर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक और बड़ी एक इम्पोर्टेंट इशू आपने हाईलाइट किया हुआ है कि देखिए, हम लोग तो चैंपियंस को देख लेते हैं, है ना? हम टीवी पे देखते हैं, टेलीविजन में न्यूज आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर कोई पोस्ट कर सकते हैं इन बिग स्टोरीज के बारे में। पर एक जो चैंपियन बनते हैं ना, पकड़ लीजिए आप MS धोनी, जो आज एक हीरो बन के उभर रहे और एक लेजेंड हो गए वो, तो उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कैसे उभर के आए, कितने स्ट्रगल्स उन्होंने किया। सो दीज आर द फैक्टर्स जो हम लोगों को एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दिखाना चाहिए और स्टोरीज करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टोरीज है जो हम सभी को इंस्पायर करते हैं। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट। देखिए, मैंने जब करियर शुरुआत की थी तो 2001-2002 तभी गुवाहाटी में बहुत एक डिस्टर्बेंस सा एक माहौल था, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। लॉट ऑफ इज इट ओके इफ आई मिक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर? Yes, ma'am, perfectly. ओके। तो मैंने जब शुरुआत की थी प्राग न्यूज से, तब बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट के स्टोरीज आ रहे थे, हम लोगों को झटपट बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट कवर करना पड़ता है। वो बहुत एक डिस्टर्बिंग सा माहौल था असम में उस टाइम में। और एज ए जर्नलिस्ट, देखिए, जर्नलिस्ट तो एक ह्यूमन बीइंग ही होते हैं ना, हम लोगों के पास इमोशंस होते हैं, और बहुत एक तकलीफ देने वाले स्टोरीज थे तब। But slowly and slowly I thought कि political news और ये breaking news से मैं उभर के आऊं, क्योंकि मेरे background जो है it is totally sports। मैं पैदा हुई हूँ एक sporting family में, मेरे जो 4th generation है वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे। So you can very well understand the kind of sports background that I have। I was an athlete, but मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ से मैं कहाँ जाऊं। So I wanted to be a sports journalist then। So sports has always been in the blood, और मुझे लगा कि ये जो स्पोर्ट्स स्टोरीज है ये इंस्पायर करने वाले हैं हमारे जनरेशंस को। देखिए, अभी ये एक पॉलिटिकल स्टोरी,
या एक मर्डर वाले स्टोरी या कोई छेड़छाड़ वाले स्टोरी, ये हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। पर अच्छा क्या लगता है आप लोगों को, जब आप टीवी ऑन करो या आप एंड्रॉइड फोन आप ऑन करो, तो आपको अच्छा लगता है कि जब आपको मैरी कॉम दिखाई देते हैं, जब लवलीना दिखाई देते हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए, और जब युवराज सिंह कैंसर को जूझते हुए फिर से वो एक क्रिकेट की दुनिया में वापसी करे, दैट इज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। इसीलिए मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है वो बहुत 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 लाभदायक है, सेटिस्फाइंग है, क्योंकि जो भी प्रोफेशन में आप हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप डॉक्टर सपन कुमार गुप्ता एंड ऑल अदर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स अवेलेबल विल आल्सो से कि जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दैट इज द रीजन आई टुक अप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्लोली स्लोली मैंने कवरेज शुरू किया, और अभी देखिए माहौल ऐसा है कि आपको you have to adapt. Adaptability is the biggest factor now, क्योंकि न्यूज़पेपर्स जो है, आप लोगों में से कितने जन है जो न्यूज़ के लिए आप लोग कौन से मीडियम जाते हैं? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सोशल मीडिया। आप लोगों को जब न्यूज़ के बारे में बताती हूँ तो कौन सा फैक्टर है या कौन सा मीडियम है जहाँ पे आप लोग न्यूज़ सर्च करते हो? कैन एनीवन टेल मी? यू कैन टाइप इन योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. Do you go through newspapers? Do you go through social media handles like Twitter, Instagram, Facebook, or you switch on to your favorite news channels? You can type in your answers. Social media and TV. Okay, Pratik Sen Gupta, thank you. Social media handlers, Aryan Raj, thank you. मीनू कुमारी लिखती है न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया। मृदुल पाठक बोलते हैं सोशल मीडिया एंड टेलीविजन। न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया, प्रियंका, थैंक यू। Social media, newspaper, and sometimes true news. Okay. Television and social media, Karishma Kumari. Okay. All right, thank you so much for your answers. तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि न्यूज़पेपर एक हैबिट बन गए हमारे लिए, but in the long run, you must have understood the fact that this is going to be obsolete. This newspaper is going to be a thing of the past. So history बनने वाले हैं slowly. A lot of newspapers, हमारे जो national dailies है, they have switched to social media now. They have their own social media handles, either Twitter or Facebook, Instagram, TikTok pehle tha, but abhi banned hai, but TikTok is also a huge medium if you can use it properly. So why I'm asking you this question is that, we have to adapt to different media. New media is the new, sensation around the globe. When I say new media, it's obviously your Android phone. You get every story here, isn't it? आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक न्यूज, हर एक एंटरटेनमेंट आपको मिलता है आपके एंड्रॉइड फोन के द्वारा, which is new media. Digital media, social media is included in new media. So as a journalist, I have always been a broadcast journalist. मुझे टेलीविजन बहुत अच्छा लगता है, मुझे कैमरा बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि I have never been a mass comm student, but later on I have done my masters. But why I'm saying you this is television has always attracted me. But slowly and slowly, I thought, when I researched the market, I came to know that television के बाद एक और medium है जहाँ पे आप information share कर सकते हो, disseminate कर सकते हो information. That is social media, digital media. So slowly and slowly I started adapting. आप लोगों को मैं ये adapting शब्द इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो जमाना है अभी टेलीविजन का फिर से टेलीविजन से डिजिटल मीडिया तक आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी अडेप्ट करना पड़ेगा. As a journalist, I adapted to new media, and that's when comes podcast. So podcast के बारे में आप लोगों को क्या पता है? अगर आप लोग चैट बॉक्स में अगर टाइप करके लिख सकते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाऊंगी आप लोगों के साथ.
अगर कोई सुन पा रहे तो पॉडकास्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला कौन सा एक शब्द आप लोगों के जहन में आता है? to one deep conversation about any topic. Aryan Rai, thank you. That is very important. Yes, one-to-one conversation. You can connect with the other person, with the guest, and it's very, very private and very, very personal. And it becomes very, very important to connect. It's a wonderful answer. Thank you so much. और कोई लिखना चाहोगे कोई? चलिए, पॉडकास्ट क्या है? सर, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो. Connection with the listener. Yes, Ananya Ranjan, well said. Swapan sir can also join. Sumedha can also join in. Yes, ma'am. Yes. What is that one thing that you feel, what is a podcast, and why do you think it is important in today's world? है किसी के पास ये आंसर? Knowledge transfer from one person to another. Mridul Pathak, thank you. बहुत अच्छा लगा ये आंसर आपका. Ma'am, podcasting is something where you can play with your voice and communicate your message effectively. Absolutely, absolutely. So देखिए, sports through podcast, ये मेरे जहन में कब आया, कैसे आया? क्योंकि जब लॉकडाउन हो रहे थे ना, तब communicating and connecting to the society through voice. Yes, our voices are very strong. Remember, students, हमारी जो voice है वो बहुत strong है. We can get our voices to the deepest corner of our country, to the remotest area of the country. Remember, इसीलिए radio is always regarded as a strong medium of communication. क्योंकि देखिए, एक कोई अगर इतना ज्यादा educated नहीं है, ये he will not be able to understand आपने न्यूज़पेपर में क्या लिखा, या BBC के न्यूज़ में हेडलाइंस क्या आया है, या मे बी NDTV के स्टोरीज क्या है, टॉप स्टोरीज क्या है. पर अगर आप रेडियो में ये न्यूज़ सुनाते हो ना, तो दे कैन कनेक्ट विथ यू. सो रेडियो का एक दूसरा वर्जन है पॉडकास्ट. रेडियो का क्या होता है ना, आप अगर डिफरेंशिएट करें तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जैसे कि 11 बजे सपोज यू हैव अ गीतमाला, और 12 बजे, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया रेडियो, अगर 12 बजे सैनिकों के लिए कार्यक्रम होता है. बट अगर आपके पास टाइम नहीं होता है ना, यू टेंड टू मिस इट. बट पॉडकास्ट इज वन थिंग वेयर यू कैन काइंड ऑफ you can download it anytime, you can download anywhere with very minimum internet connection, or internet connection though is available to everyone because we have Android phones with us. Everybody owns an Android phone. So my answer to podcast is that podcast is a very, very strong medium of communicating from one person to other, communicating an important issue, talking about an important issue, conversing about an important issue, and spreading it throughout the globe. I have a podcast which is called Breaking Barriers. I've named it Breaking Barriers because I concentrated more on the female athletes, female coaches, and the support staff. And you must have heard the struggle stories of MC Mary Kom, maybe Rani Rampal, maybe Harleen Deol, Harmanpreet Kaur. But we also need to hear about this, about the struggles, the stories of the coaches, the female support staff. So मैंने अपने podcast का नाम रखा हुआ है Breaking Barriers, which is available free on all major listening platforms. तो ब्रेकिंग बैरियर्स में मैंने कॉन्सेंट्रेट किया कि इन लोगों के जो स्ट्रगल स्टोरीज है ना, वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उन लोगों के बारे में बताएंगे. और क्योंकि माय आइडिया वाज वेरी सिंपल, नॉट टू गेन पब्लिसिटी बट टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो दे वांट टू टेक अप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, पर कहाँ शुरू करें, कैसे शुरू करें. सो माय जॉब कम्स हियर. आई ट्राई टू ट्रेन देम. मैं ट्रेन करती हूँ उन लोगों को कि देखो, पॉडकास्ट इज वेरी सिंपल और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल और बजट फ्रेंडली होता है. तो आप लोग कहीं भी, आपके बेडरूम में आप एक मोबाइल फोन के थ्रू आप एक रिकॉर्ड कर सकते हो, आप प्रोडक्शन कर सकते हो, स्क्रिप्ट लिख सकते हो, फिर कंटेंट क्रिएट करके आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो. एंड ऑल मेजर लिसनिंग प्लेटफॉर्म्स विल गेट यू टू पब्लिश or disseminate your podcast for free.
So India is the third largest podcast producing country after the USA and China. So इंडिया में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पॉडकास्ट तो नया चीज है, ये नया चीज नहीं है, ये पुराने बहुत दिनों से चल रहे, क्योंकि रेडियो है हमारे पास, तो वही है पॉडकास्ट. पर पॉडकास्ट इज वन थिंग दैट कैन बी इजीली एक्सेसिबल, इजीली डाउनलोडेड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. और जब भी आप फ्री होते हो ना, आप आपके क्लास नहीं होते, आप कैंटीन में बैठे हुए हो, गप्पे मार रहे हो, चाय पी सकते हो, तभी आप डाउनलोड करके ना आप पॉडकास्ट सुन सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट पॉडकास्ट इज दैट, देखिए टेलीविजन में क्या होता है, आपको सपोज एक पर्टिकुलर स्टोरी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर यू आर बाउंड टू वॉच इट, बिकॉज हर एक चैनल वही टीआरपी के रेस पे दिखा रहे. एवरीवन इज ट्राइंग टू फॉलो द सेम ट्रेंड. बट हियर अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, तो स्पोर्ट्स के जो पॉडकास्ट है डाउनलोड करके आप सुन सकते हो. आपके आइडॉल जो है, नीरज चोपड़ा हो या MS धोनी हो, लोगों की जो बात है, स्टोरीज है, वो सुन सकते हो. अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक के पॉडकास्ट बहुत है, कुकिंग के पॉडकास्ट है, फैशन के ऊपर है, स्टूडेंट्स के ऊपर है. तो पॉडकास्ट गिव्स यू अ वैरायटी, you know, it gives you a variety and it allows you to broaden up your knowledge. And so my journey with podcast started. अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो it started in 2017 जब मुझे ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, DFAT, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने मुझे इनवाइट किया था. 2017 में मुझे बताया गया था कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स है और आपको इंडिया रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और आप इनवाइटेड हो ऑस्ट्रेलिया टू कवर Gold Coast Commonwealth Games for Australia Broadcasting Corporation. For a journalist residing in Guwahati, Assam, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना गुवाहाटी कहाँ पे है, चाइना में है, भूटान में है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं, पर थैंक्स टू सर्टेन थिंग्स अभी माहौल चेंज हो रहा है. और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि मुझे BBC, ABC के जितने दिग्गज हैं, बिग जर्नलिस्ट, बिग एडिटर्स, उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा. और कितना सीख पाऊंगी मैं. मेरे जो पोस्ट है सोशल मीडिया में, आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो या करोगे इन द नियर फ्यूचर, आप लोगों को एक बात आप नोटिस कर पाओगे कि मैं जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ ना स्पोर्ट्स के बारे में या प्रोफेशनल करियर के बारे में, मैं हमेशा देती हूँ कि #learning never stops. ये जो लर्निंग है ना हम लोगों के लिए, वो कभी भी खत्म नहीं होता है. एवरी डे इज अ लर्निंग डे. तो मैं ये मोटो कैरी करती हूँ हमेशा अपने साथ. और जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई 2018 में, मुझे ट्रेनिंग दिया गया पॉडकास्ट में, कैसे करते हो. मुझे लगा कि ये अजीब एक मीडियम है, कैसे पॉडकास्ट कर सकूंगी, क्या कर सकूंगी, कैसे कर सकूंगी. देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. पर मुझे सिडनी के जो ABC ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की जो हेड ऑफिस है, वहां पे मुझे माइक विलियम्स, जो एक बड़ा नाम है पॉडकास्ट के दुनिया में, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया. 3-4 दिन मुझे ट्रेनिंग दिया कि प्रार्थना, दे कॉल मी प्रो, बिकॉज प्रार्थना वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो दे कॉल मी प्रो, कि प्रो यू कैन डू इट, इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी बजट फ्रेंडली. तो मैंने सोचा कि ओके फाइन, लेट मी लर्न, क्योंकि लर्निंग इज वेरी फन एंड लर्निंग नेवर स्टॉप्स. क्योंकि मैंने वो सीखा, पॉडकास्ट सीखा, इसीलिए आज मुझे लगता है कि दिस इज रियली हेल्पिंग मी टू my voice is going at different corners of the country and I have listeners from all across the globe. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे ये जो एक पॉडकास्ट है, मैंने मेंस्ट्रुएशन के ऊपर किया, जो एक सब्जेक्ट है, किसी को एक टैबू है, सभी को अच्छा नहीं लगता कि इसके ऊपर बात करें कि एथलीट को क्या करना चाहिए जो एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहे है, या न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए एक एथलीट के लिए, न्यूट्रिशन, पोस्ट न्यूट्रिशन, प्री न्यूट्रिशन, डोपिंग. These were the topics I took up. These were the topics I took up, and fortunately, I will share a very good news with all of you that World Sports Press Association के 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में से टॉप 10 की कैटेगरी में मेरे पॉडकास्ट आते हैं. और दिस ईयर आई हैव बीन अ फाइनलिस्ट. थैंक यू सुमेधा. एंड देखिए, मैं ये बात आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब 2017-18 में जो पॉडकास्ट सीखा, वो जो नॉलेज मैंने गेन किया ना, उसी नॉलेज की वजह से आज मैं इंटरनेशनली AIPS के एक एक्टिव मेंबर बन गई.
और जो जितने दिग्गज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एडिटर्स हैं, उन लोगों के साथ मैंने टक्कर दिया और मैं टॉप 10 में आई। देयर वर मोर देन 3 lakhs एंट्रीज और उसमें से दिस इज द सेकंड टाइम दैट आई हैव कम इन द टॉप 10। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ये शेयर करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर आप लोगों को इंस्पायर करके पॉडकास्ट, स्पोर्ट्स पॉडकास्ट में आप लोगों को ला सकती हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी अनदर इम्पोर्टेंट I would say a satisfaction for me. 22 years in sports journalism has never been easy, and adapting after COVID आप लोगों को नहीं लगता है कि बहुत सारे चेंजेस आ गए सोसाइटी में, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि जॉब्स में नहीं है, बहुत लोगों ने जान गंवाए। अभी Ravish Kumar जैसे दिग्गज journalists, they have started their own podcast, they have started their own YouTube channels. So this is the reason why I have kept on saying adaptive. तो आप लोगों को अगर पॉडकास्ट के बारे में कुछ जानना है तो यू कैन कनेक्ट विद मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। अगर कुछ क्वेश्चंस है आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो। और चलिए आप लोगों के जो कैमरास है वो ऑन कर दीजिए, क्योंकि मुझे देखना है आप लोगों को कैसा लग रहा है, कि क्योंकि मैं ही बोलती जा रही हूँ और आई थिंक आई एम द ओनली वन एंड सुमेधा इज ऑल्सो देयर ऑन कैमरा। So kindly switch on your cameras. It's okay. It's just an informal conversation. ऐसा नहीं है कि हम लोग एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। और हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। करिश्मा कुमारी, सुप्रिया कुमारी, सबको मैं दिख पा रही हूँ अभी। आप लोगों ने WPL देखा? Hello to all of you. Now I can see all your faces. Hello. Hello, ma'am. Okay, so come on, if you have any questions, आप लोगों के जहन में अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करके दे सकते हो, या फिर हैंड रेज करके भी आप पूछ सकते हो। पॉडकास्ट के बारे में आप लोगों को क्या जानना है और कितना एक्साइटिंग है आप लोगों के लिए ये नया टर्म जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक नया टर्म है, पर दिस इज वेरी वेरी Ma'am, I think you're on mute. Can you all hear me now? Yes, ma'am. Yes, if you have any questions, you can ask me. So how many of you are interested in podcasting? Do you want to know more about podcasting? Do you want to know how we can spread sports through podcast? How I am doing it, how a lot of other podcasters are doing it, how you're using your social media handle to, distribute your podcast. अगर जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। Please ask students. Am I audible? Yes, am I audible? Yes, you can type in your questions. So you must be thinking कि television channels इतने हैं, national channels इतने हैं, newspapers हैं, podcast क्यों करें? So let me tell you that a lot of the leading newspapers, big media houses have switched to podcast now because they know the future is audio. And आप लोगों ने Ma'am? Pratna ma'am? Pratna ma'am, you're not audible. Students, please be patient. There must be some technical glitch.
There's a huge network issue. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो बहुत सारे ऐसे जो नेशनल मीडिया है और सब लोग स्विच कर रहे हैं अभी पॉडकास्ट क्योंकि सबको लगता है कि दिस इज द फ्यूचर। और आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर जवाब भी लिखा था कि पॉडकास्ट किया है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग। और अच्छा लगता है जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, वैसे ही मैं अपने गेस्ट के साथ बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मेकअप लगाना पड़ता है। मैं जब टेलीविजन में काम करती हूँ ना, तब आई हैव टू लुक गुड, आई हैव टू पुट ऑन मेकअप, आई हैव टू पुट ऑन माय बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लोथ्स, गुड स्माइल, और कैमरा के सामने मुझे अच्छी तरह से बैठना है, बैठ के इंटरव्यू करना है। पर पॉडकास्ट में ये सब नहीं होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट इन अ पॉडकास्ट एपिसोड आपके गेस्ट के साथ, आप एक इनफॉर्मल चिट चैट जैसे कि आप एक फ्रेंड के साथ करते हो ना, वैसे आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा दिखना है, आपको मेकअप करना है और ब्लेजर पहनना है, फॉर्मल ड्रेस पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मुझे पता है जब कोविड चल रहे थे ना, तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किया था, मेंटल हेल्थ के ऊपर किया था कि अभी स्टूडेंट्स जो है और गार्जियंस जो है, सबको अभी कोविड के टाइम में सबको मेंटल का इश्यूज हुआ था ना, मेंटल हेल्थ इन द सेंस की पागल नहीं, पर क्योंकि हम लोग घर में थे, ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। सो दिस इज हाउ दिस मीडियम, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम। आपकी वॉइस ना सब सुन रहे हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि जियो में या गूगल में, एप्पल में, सब जगह आपके वॉइस जो है, आपके पॉडकास्ट जो है, वो सुन सकते हैं। इसीलिए आई थिंक, और बजट फ्रेंडली है, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी है, ज्यादा आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो आपके एंड्रॉइड फोन से। सो सुमेधा हैज कम अप विद अ question: how to generate, is there any script in the podcast, how to generate revenue through podcasting in terms of sports reporting? Is there a script? It depends from one person to other. Like आप लोग जब एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, बहुत जन ऐसे होते हैं कि बहुत सीरियसली आप लोग ना थरोली आपके बुक्स, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, और बहुत जन ऐसे हैं जो कि सिर्फ पॉइंट्स याद रखते हैं। ये इस आंसर में ये पॉइंट्स मैं डाल दूंगी, इसके ऊपर थोड़ा इलैबोरेट कर दूंगी, बस मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ जर्नलिस्ट ऑल्सो वर्क इन पॉडकास्ट। मैं एक ऐसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ जहां मुझे मैं स्क्रिप्टिंग कभी नहीं करती हूँ, पर स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ, रिसर्च करती हूँ। और सपोज आई हैव टू डू समथिंग ऑन स्वाति कुमारी, सपोज, सो व्हाट आई विल डू इज, स्वाति क्या करती है, कहाँ से उन्होंने करियर शुरू की, उनके कोच कौन है, उनके पेरेंट्स कौन है, घर में कोई स्पोर्ट्स करते हैं क्या, और उनके कोच के बारे में क्या ख्याल है, ये सब में जो मेजर पॉइंट्स है ना, वो मैं जहन में डाल देती हूँ। उसके बाद एक एक पॉइंट करके मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद आई कीप स्टार्ट डूइंग माय पॉडकास्ट। So yes, you can start doing your scripting, which is very very important. That is called pre-production. Pre-production करके आप content create कर दो पहले, थोड़ा research कर लो जिनके ऊपर आप podcast करने वाले हो या topic के ऊपर। उसके बाद आप script लिख लो कि questions क्या put करोगे, harsh questions होगा या आप, it depends on the podcast that you are creating. कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे personal questions पूछते हैं, वैसा भी पॉडकास्ट है वो जो चलता है। कोई ऐसे पॉडकास्ट है जो सिर्फ प्रोफेशनल पॉइंट्स में ध्यान देते हैं, तो योर क्वेश्चंस विल बी, योर स्क्रिप्ट विल बी रिलेटेड एब्सोल्युटली विद द प्रोफेशनल करियर ऑफ द प्लेयर। और कई ऐसे होते हैं कि थोड़ा गप्पे मार लेते हैं, वैसा भी पॉडकास्ट है जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा गप्पे करते हैं, फिर हंसते हैं, बात करते हैं, हंसते हंसते इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, वैसा भी होता है। So it depends on what kind of podcast you really want to come up with. Or Sumedha, you asked about revenue. Yes, if you have if you have been able to create your own brand of podcast, like my podcast Breaking Barriers is sponsored and it is supported by DFAT, Australia government, and ABC. जिनको अच्छा लगता है, कि जो अच्छा लगता है इन लोगों को टॉपिक, वो टॉपिक वो लोग उठा लेते हैं मेरे से, फिर वो ABC के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डाल देते हैं, एंड दिस जनरेट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर मी।
I get money in Australian dollars then. So what is important is आपके अगर content अच्छे हो, अगर you have come up with an idea which is completely out of the box, you can definitely earn a lot of money, and there will be sponsors coming to you. We want to collaborate with you. We will kind of get you this amount of money. We need these guests to be in your podcast, and we want you to interview them. So it is very easy, and most importantly, it is not much time consuming. The only time consuming factor is आपके script and research. और उसके बाद अगर there are प्लेटफॉर्म्स लाइक एंकर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, बहुत इजी है एडिट करना, वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसीलिए आप फट से आप एक एपिसोड करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. एंड somebody has come up with another question. What kind of equipment you need to start a podcast? How do you come up with the topics and guests? पहले में ये Pratik Sen Gupta, thank you. What kind of equipments do you need to start a podcast? You need a good microphone, and you need a good mobile phone. Chinese phones are very good, like Realme, Redmi, any Android phone that you take up, Oppo, Samsung, you can start recording in there in your own mobile phone. And then if you don't have a microphone, that's fine. Your mobile phone will work. Your mobile phone has great, audio catching capacity. दो phones चाहिए, एक आपके पास और एक आपके guest के पास, जो कि आप ऐसे पकड़ के उनके बाइट्स ले सकते हो, उनके इंटरव्यूज ले सकते हो. उसके बाद आई सेड एंकर इज अ गुड प्लेटफॉर्म. एंकर में जाके आप एडिट कर सकते हो, और एंकर में एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको फोन भी नहीं चाहिए. एंकर हैज अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो फ्री में. एवरीथिंग कम्स फॉर फ्री, एंड एडिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट एवरीवन कैन स्टार्ट योर पॉडकास्ट ऑन एंकर. एंकर ऐप इज इजीली अवेलेबल, एंड वहां पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और एंकर हैज वंडरफुल टाई अप विद स्पॉटिफाई, सो दे डिस्ट्रीब्यूट योर पॉडकास्ट फॉर फ्री to all major listening platforms. And there's another question coming up. How do you come up with the topics and guests for your podcast? It is just based on human interest. Shruti Kumari. So Shruti, it depends. मैंने पहले बताया कि what kind of podcast you want to do. My kind of podcast is breaking barriers, जो नाम में ही रखा हुआ है कि आपने कितना बैरियर ब्रेक करके आप सर्वाइव करके आप वर्ल्ड चैंपियन बने हो. You may be a Lavlina Borgohain, you may be MS Dhoni, you may be a Hima Das, you may be Mary Kom, you may be a sports minister even, So how do I get the idea? मुझे लगता है कि मैं करंट ट्रेंड में जाती हूँ. जब मैंने शुरुआत की थी तब कोविड चल रहे थे, तो मैंने मेंटल हेल्थ के ऊपर किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेंटल हेल्थ जो है सबको अच्छा लगेगा अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के से हेल्प ले, कि हम लोग घर पे हैं, रेगुलर काम नहीं कर पा रहे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे, तो क्या करें, कैसे उभर के आए. सो दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन. अभी क्या चल रहा है, अभी IPL चल रहा है, WPL हो गए, तो यू कैन स्टार्ट विद IPL. तो मैंने IPL के ऊपर किया. WPL के टाइम में मैंने किया, एक मैच कमिश्नर है जो कि एक एक्स फीमेल क्रिकेटर है, असम से क्रिकेट खेलती थी, रजनी बसनीत, तो वो ICC के अभी मैच रेफरी है. तो मैंने उनके ऊपर हाफ एन आवर का एक शो किया, पॉडकास्ट किया. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सिलेक्ट कि आपको टॉपिक क्या चाहिए. और देखिए, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. स्ट्रगल स्टोरी आपको दिखाना है, आपको एंटरटेनमेंट दिखाना है. जैसे कि ट्यूसडे को ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के जो मैच चल रहे थे, तो वो स्टेडियम में आए, तो वो बहुत एक सुंदर एक हैप्पी सा स्टोरी बन गया ना सबके लिए. तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हो कि कैसे ऋषभ पंत इज गिविंग स्माइल्स इन द फेस ऑफ हिज टीममेट्स, कैसे उनके फैंस रिएक्ट कर रहे थे और क्या कर रहे हैं. अभी देखिए एशियन गेम्स आ रहे हैं, उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स आ रहे हैं 2024 में. मैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आई विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द नेशनल एथलीट्स, कि कैसे वो लोग तैयार कर रहे हैं, how they are trying to prepare themselves, and how they are trying to compete. Who's going to be the competitor for, suppose, Neeraj Chopra.
नीरज चोपड़ा कहाँ है अभी फिलहाल कहाँ है, क्योंकि सब लोगों को जानना उन लोगों को भी एक जहन में होता है क्या है अभी नीरज चोपड़ा कहाँ है, नीरज चोपड़ा फिर से गोल्ड कर पाएंगे, फिर से उनको गोल्ड मेडल मिलेंगे, डिफेंड कर पाएंगे टाइटल। तो दीज आर द क्वेश्चंस आई ट्राई टू रिसर्च माय ऑडियंस, आई ट्राई टू रिसर्च। और उसके बाद मैं एक आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं एक ऑफिस बॉय से जीएम तक मैं कम्युनिकेट करती हूँ। उन लोगों की जो आइडियाज हैं मेरे पास आते हैं, मैं जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिलते हैं, तो उसी के ऊपर मैं स्टोरीज करती हूँ, मैं पॉडकास्ट करती हूँ और सभी को अच्छा लगता है क्योंकि करंट टॉपिक सबको अच्छा लगता है। अभी देखिए आप सपोज यू आर गोइंग आउट टू योर कॉलेज एंड यू आर फेसिंग ह्यूज ट्रैफिक जैम्स। सो ट्रैफिक जैम के टाइम पे आप अगर गाड़ी में बैठे हुए हो तो कौन सा टॉपिक के बारे में आपको सुनना पसंद करोगे, या what is the thing that you want to know about and divert your attention from the traffic jam. So you have to think about it and you have to think about all those situations को आप खुद को आप उस सिचुएशन में डालो, उसके बाद आप रिसर्च करके एक बहुत सुंदर एक पॉडकास्ट आप कर सकते हो। एंड आई थिंक सिर्फ आप यू गो टू एन एंकर ऐप, you record it for free, you edit it for free, you distribute it for free, and you have social media handles like you go to Instagram, you go to Facebook, you go to Twitter, you go to LinkedIn, and then you just distribute your links. और अगर content अच्छा हो तो definitely your podcast is going to be a huge hit. Any more questions coming up? Ananya Ranjan likhte, good morning, ma'am. All of us are aware of podcasts being very popular among the youngsters. What should be done to make it as familiar as they are for the other generations as well? Ananya, it is important for you to do your own research in a sense कि मैंने अभी भी पता है कि एक ऑफिस बॉय से लेकर जीएम तक या डायरेक्टर लेवल तक आप अगर स्टेडियम में जाते हो तो पेरेंट्स से बात करो, और आपको ओल्ड जनरेशन के भी दादा दादी मिलेंगे तो उन लोगों के साथ ऐसे बात करो, बात करके उन लोगों से जानने की कोशिश करो कि उन लोगों को कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है और व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। तो वो लोग जब कहेंगे ना कि नहीं आज के जनरेशन के साथ हमारे एक जनरेशन गैप है और हम लोग एक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, तो जस्ट हैव अ टॉक विद देम एंड देन टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स ऑन podcast. So this is going to be really helpful for you to the people who really want to learn about अच्छा ये चल रहा है ऐसे communicate करें। तो you can also get the help of a clinical psychologist, you can also get a help of maybe someone who is more into meditation. तो कैसे communicate करें, क्या करें? So these are the things you have to think about. You have to think about the market, you have to think about the value of your podcast, the value of what you talk. And remember, मैं हमेशा जहाँ भी मैं workshop करती हूँ, language is very important. ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपको एसएमईज में ही करना है, हिंदी में ही करना है. You do it in your own language. आपको टारगेट बनाना है कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन होंगे, who are going to be my target audience. Speak to them in your own language. जो लैंग्वेज आपको लगता है कि इसी लैंग्वेज में मैं कंफर्ट रहूंगी और मेरे ऑडियंस भी मेरे ये जो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है मेरे गेस्ट के साथ सुन पाएंगे या फिर कनेक्ट कर पाएंगे. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू स्टार्ट अ पॉडकास्ट? It's the connection with your audience. It's the connection with your listeners. Like I'm trying to connect with all of you. I'm trying to see your faces. I'm trying to connect with you with, throwing you questions. This is how you need to connect. This is how you need to think about your market. You think about your research, your script, and make your scripts very, very simple. क्योंकि script अगर simple होना तभी all sections of society will be able to connect with it. अगर खूब ज्यादा हाई-फाई एक आप स्क्रिप्ट बना देते हो तो your audience will be very, very limited. Remember, so these are the very minor things that you need to think about it and you have to proceed with it. I hope you all got your answers. Any more questions? Yes, I'm waiting for your questions. चलिए खुल के बात करते हैं. Ma'am, there's a question from Soumya. Okay. Has she written it? Okay. Yes, ma'am. How any athlete work as government position? For example, government has made Lavlina Borgohain DSP of Assam. So how will she work as a DSP?
That's a very, very, very good question. You know, मेरे साथ इस question को लेके बहुत ज़्यादा what to say controversy होते हैं कि there are a lot of people जिनको लगता है कि athlete को लोगों को क्यों DSP देते हैं? How are they going to help the workforce, the police force in that? Let me tell you, these athletes, when they are posted in government jobs, maybe DSP or any other jobs they are put in, they bring a good name to the workforce. They bring a goodwill to the workforce. When you bring in goodwill, good name to the workforce, it really, really benefits not only to the police commissioner or the police community, but also to the society. It really helps. Suppose she's in Assam Police, Hima is also in Assam Police. So this really helps. Lavina, when she won the World Championship a couple of days back, she was felicitated by the Director General of Police, DGP, GP Singh, who is known to be extremely, he's someone who is very strict. He doesn't react or comment a lot, but he's a huge sports buff. I think sports is the only topic that can connect with each one of us. I don't think so any other political story or an entertainment story can connect with us the way sports connects with us. And in India, especially in the northeastern and the eastern section, sports is coming up in a huge way. So watch out, and I hope in the near future you all will be wonderful sports journalists and you will start your own podcast without the help of your parents, without the help of anybody. In a sense, I'm saying this in a sense, without the help of parents, in a sense of money, monetary help, because everything comes for free nowadays. So these companies are also encouraging people to take up podcasts because, again, I'm repeating this, newspapers and television are a thing of the past now. So it's always good to adapt to new technologies. And we have the strongest medium in our hand, isn't it? Our mobile phones. They give us everything. आपके mobile bills आप mobile से दे सकते हो, आपके online shopping GPay कर सकते हो, आपके films के ticket आप कर सकते हो, you can do your podcast, you can do your live shows through your mobile phone. So this is a very strong medium. आप सभी के पास एक mobile phone है, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और I am sure in the near future you will turn out to be very, very good podcaster. Someone is interested in sports can start your sports podcast. Someone is interested in fashion can start it. Someone is interested in books के ऊपर भी आप लोग podcast कर सकते हो. साहित्य के ऊपर कर सकते हो. There are huge topics and variety of topics available. और podcast का एक beauty जो है वो क्या है कि आपके जो इंपॉर्टेंट आपके फेवरेट टॉपिक्स है ना उसी के ऊपर आप बात कर सकते हो. ऐसा नहीं कि मुझे पॉलिटिकल न्यूज अच्छा नहीं लगता पर फिर भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं टेलीविजन चैनल में हूँ, मुझे पॉलिटिक्स कवर करना पड़ेगा या फिर मुझे पॉलिटिकल रैली कवर करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. तो you have your own personal choice and you can carry forward, and this is how you can start your podcast. Some more when it comes to make career in podcast, how to convince that a student can survive making it as his or her main career. Sangeeta Saxena. In coming times, can we see podcasts in regional languages? First question, how to convince your student, how he or she will be successful. I think it is very important for them to understand the market now. It is very important to think about what is happening globally. Globally, it is only in India that, television is still loved. When I was in Australia and Europe for my sports journalism work, people came up to me and said, how are Indians reacting to podcasts? I said, it is relatively a new subject for them because we are more dependent on televisions. We are couch potatoes. We love our television and अच्छा लगता है कि कुछ बना के television के सामने बैठ के कुछ खा के एक IPL का match देख लेते हैं या फिर एक talk show देख लेते हैं. पर globally, jokes apart, globally अगर देखा जाए तो they are very much into audio medium because they feel it is the strongest medium and it is the strongest medium through which we can communicate with each and every community worldwide. And जब आपने पूछा कि in the coming times can we see podcasts in regional languages? This is Soumya Shukla. Yes, absolutely. Regional films are doing good. Haven't you seen what happened in Oscars, RRR?
Haven't you seen Elephant Whisperers? I think this is the reason why we should switch to regional languages. मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप English, Hindi use ना करके आपके regional language में आप start कर सकते हो. I have started my regional language podcast too because एक लैंग्वेज के जब अगर बात आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये बहुत अच्छा टॉपिक था, ये पर्सनालिटी के साथ मैं कर पाती, पर देखो उनको इंग्लिश नहीं आती तो आई कैन नॉट डू माय पॉडकास्ट. सो नेवर लेट दिस हैपन. अगर उन लोगों को लगता है कि आपकी गेस्ट को लगता है कि मैं भोजपुरी में करना चाहती हूँ, चलिए आप कर लीजिए. अगर असमीज में करना चाहते हो, चलिए कर लीजिए. बंगाली में करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्या हर्ज है. These are our important Indian languages और हम लोग communicate करेंगे. We are communicators. Language doesn't matter. Have you seen the, oh, by the way, the Italy government parliament has come up with a very strict rule. You must have been aware of the story that if you speak English, you'll be fine. So let's start our regional things. Let's, start working on regional podcasts. Let's start working on regional things. And we will definitely be able to achieve what we want. Soumya says, thank you. It was wonderful. And anybody wants to ask anything? Always, one thing I would like to add here is always try to be someone who has his or her own ideal. Agar Sumedha ye kar rahi hai na, to mujhe bhi karna chahiye. No. Start having your own ideology, start having your own ideas, your own concept. कोई अगर hair straight कर रहे हैं ना तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है. Start to have your own style, your own personality, your own persona that will click you. अरे ये तो अच्छा ये XYZ ये तो ABC के जैसा है, ये तो उनके जैसा है, XYZ के जैसा है, उनका तो कुछ है ही नहीं, अपना कुछ चाहिए होता है, isn't it? So try to build up your own image, try to have your own regional language. क्या है अगर कोई आपको हंसता है कि अरे इसको देखो इंग्लिश या हिंदी में तो नहीं आता है, पॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे. No, give them the answer that हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं बंगाली में करूंगी, मैं असमीज में करूंगी, मैं नागामीज में करूंगी, मैं पंजाबी में करूंगी, है ना. These are our अनमोल languages, these are our regional languages जिसको हम लोगों को यूज करना चाहिए. And never be ashamed of the fact that you don't know. There is always a scope for you to learn. And how many of you are following me now? Sumedha can get you my Facebook, Twitter, Instagram handles, and you all can have a word with them. Do connect with me. Please connect with me. And you have any issues, you can connect directly with me. Soumya Shukla writes, does athlete need to be qualified for becoming coach? Dekhiye, coaching is, yes, if you are an athlete, that is an added advantage. That is a bonus if you want to be a coach. But sports is about the scientific approach. Sports is no longer about, chaliye khelte hain, aisa nahi hai. If you want to excel in international platforms, you have to have the scientific approach. Yeah, there are courses which offers you scientific help. And if you're an athlete, ex-athlete, just go for good courses. 3 to 6 months courses are available, and then you can be a qualified coach. And I hope if you want to be a coach, you'll definitely bring out hundreds and thousands of, athletes to international platform. Anyone else has any queries? बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ interact करके. I mean, it's good that we talk about sports because this is one subject we don't usually talk about unless and until, India wins a gold medal in Olympics, or Indian cricket team, they really come up with the World Cup, or, अभी IPL चल रहे हैं, WPL हो गए, अभी World Championships हो गए, अभी Paris Olympics आ रहे. So these are the things. I think Paris Olympics के पहले आप लोग आपके podcast शुरू कर सकते हो. Any topics that you love. Maybe you love about Sahitya, you can start doing it. Maybe you can start doing it on fitness. Maybe you can start doing it on yoga. There are ample of topics. जो भी आपके जहन में आए, just do it.
just go for it. Give it a try. I think I have a question, how to earn from initial stage of podcasting. देखिए इनिशियल स्टेज मुझे नहीं लगता कि आप लोग इमीडिएटली अर्न कर पाओगे, क्योंकि आपकी एक्सपेंसेस भी तो नहीं है ना. ऐसा नहीं कि आपको गेस्ट को पैसा देना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि आपको ह्यूज एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आपको खरीदना पड़ेगा या फिर एडिटिंग करना पड़ेगा. एवरीथिंग इज फॉर फ्री. तो इनिशियली डोंट थिंक अबाउट द मनी, इनिशियली थिंक अबाउट द ब्रांड यू वांट टू क्रिएट. आप एक ब्रांड क्रिएट कर लो, उसके बाद मनी इज कमिंग टू यू. यू डोंट हैव टू गो टुवर्ड्स मनी, it is coming back to you. There will be sponsors coming back to you. So anybody else has any questions or queries? Thank you, Aryan. I'm happy that you all have, really joined, and it's good that you want to know about it. And it's always just keep your options open. If you are planning that मुझे एक broadcast journalist बनना है, but in the same time think about the digital media that is emerging. Everyone is starting doing their own independent journalism now, independent channels, जहाँ पे nobody will have a say on what your content should be. So try to build up your own image, try to build up your own brand, and Am I audible? आप लोगों को लगेगा ना कि ब्रांड क्या है, खुद का एक ब्रांड क्रिएट करो ना. जी मैम नमस्कार, मैं राशिद असिस्टेंट प्रोफेसर है एमआईटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में हूँ. मैंने मैम मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है बहुत दिन. आपसे पे एक मेरा सवाल है मैम कि जब हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करते हैं, जब हम स्पोर्ट्स पत्रकार की बात करते हैं, तो अगर एक बच्चा या ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बर्डिंग जर्नलिस्ट है, ये जब एक मैदान पे जाकर के कोई खेल को रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें वो क्या तत्व या फिर मैं कहूँ कि वो क्या एलिमेंट वो डाले जिनसे उनका रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा बने, वो क्या चीज़ें, कैसे वो उन चीज़ों को वो बना करके रिपोर्ट अपने न्यूज़ चैनल या फिर अपने रेडियो को दे, जिससे उनका रिपोर्ट जो है वो इट इज़ वेरी गुड फॉर देम. तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे मैम इन बच्चों को, जो कि पॉइंट्स वो इम्पोर्टेंट होगा उनके रिपोर्ट के लिए? ओह एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा सवाल है आपका, जो कि हम अभी यही डिस्कस करते थे ऑफिस में. आई वाज हैविंग अ वर्ड विद माय कोलीग कि देखिए टुडे द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम ही इज हैविंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. सब लोग जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो वो बोलते हैं वही उठा के लाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और वही टेलीविजन हो या न्यूज़पेपर हो उसमें डाल देते हैं. तो इफ यू वांट टू ब्रेक दैट बैरियर, if you want to have your own image, how different you are going to report that story, that is important. So how differently you are going to do that story? Agar if you are going to a stadium to cover an IPL match, everyone will do. आजकल तो bowling, ball by ball commentary and write up आ जाते हैं digital media में, ESPN, Cricinfo में. तो how differently you are going to treat that story? Treatment is important. Do a story on the athlete who has come up with a background की जहाँ पे उन्होंने सिर्फ he has seen poverty, he has come up with a lot of issues जहाँ पे उनका family भी साथ नहीं दे रहे थे, maybe for example, और maybe उनको खाने में भी कुछ नहीं मिलता था, nutrition. तो these are the stories, if you come up with, that story will sell. हम लोगों को भी अच्छा लगता है ना कि अच्छा ये इतने कष्ट करके यहाँ तक आ गए और अभी स्टार बन गए. जैसे कि धोनी की जो फिल्म है उसके बाद he started gaining more and more popularity because तभी लगा कि अच्छा he was going through so much. He was posted in NF रेलवे का इस डिपार्टमेंट में, and he has taken a decision कि वो जॉब नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के he want to pursue cricket. These are the stories, you have to bring it out. अगर आप स्टेडियम में जाते हो तो एक मैच का रिपोर्ट ऑफिस में लाके मत दो. यू डू अ स्टोरी कि क्या चल रहा था, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, प्लेयर्स के बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, कोच के बारे में लिखिए, कोच का बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, हाउ ही और शी केम इनटू कोचिंग, व्हाई ही और शी हैज चोजन टू बी अ कोच. these are the stories that really matters. For human interest stories really clicks. Yes, someone has written Mary Kom. Mary Kom. How many of you, the rest of India, didn't know about Mary Kom, isn't it? It is the job of sports journalists to bring out the story behind the story. अभी आप मुझे देख रहे हो ना कि I'm a sports journalist, कि मेरी behind की story क्या है? How did I achieve
कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंच गई. How have I become a mentor now for Australia Broadcasting Corporation? There is a story. मेरे पीछे भी एक story है ना? तो आपको उस स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म तक आज रितु फोगाट हो गए, विनेश फोगाट कैसे आगे, कहाँ से आगे, कैसे पहुंचे. अचीवमेंट्स के बारे में स्टोरी ना करें क्योंकि एवरीवन नोज. अभी मैरीकॉम के बारे में क्या बताना है, अभी निखत जरीन के बारे में क्या बताना है, कुछ नहीं, सबको पता है क्योंकि सबको वो न्यूज आ गए ना. तो निखत के जो स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी है वो निकाल के लाओ. Maybe talk with her parents के story, how the society did not encourage Nikhat's parents, how उनके relatives ने कैसे उन लोगों को धिक्कारा था कि अच्छा शॉर्ट्स पहन के हाफ पैंट पहना के आप लोग रिंग में डाल रहे हो, and that too coming from a conservative family. These are the stories. If you do such kind of stories, your story will sell, your story will be a big hit because nobody wants to know the general story. जनरल स्टोरी किसको जानना पसंद है, किसी को नहीं. वी ऑलवेज वांट समथिंग व्हिच इज एक्स्ट्रा, है ना. आई होप यू गॉट योर आंसर. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. आई होप इट रियली वर्क्स. थैंक यू. Thank you, ma'am. Anyone else has any query? Ma'am, can we wrap up if you allow? Yes. First of all, before wrapping up, I would say thank you to all of you. सभी को मेरा धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके. आई एम ऑलवेज देयर इन द नियर फ्यूचर. अगर आप लोगों को लगता है कि फिजिकली मैं आके आप लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ, कनेक्ट कर सकती हूँ, या अगर पॉडकास्ट या पर्सनालिटी के ऊपर या स्पोर्ट्स के ऊपर अगर आप लोगों को लगता है कि I can come down to your place if you want, and you can collaborate something on the coming days future. अगर कुछ कर पाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा. Now, I would request my dear colleague from ASCO, Amity University, Jharkhand, Ms. Priya Shom ma'am, to give away the vote of thanks. Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. It was really a knowledge enriching session where you shared all your practical experiences, what all to cover about the sports journalism, what the struggles of the sports people are. I am sure that most of us students are now highly inspired about the sports journalism, and we will get lots and lots of such budding journalists into this specific beat of sports journalism. And well, ma'am, you are a veteran in this field, so and that too from last 22 years you have been working here. You have covered up so much of important things like FIFA, Commonwealth Games, ICC Cricket World Cup, and so on. It was a tremendous experience where students had a lot of interaction. They got to know so much about this particular specific beat, sports journalism, and also podcasting. All those experiences, practical experiences, it also enriched the faculty members and their things and experiences also. Thank you so much, ma'am. Thank you. I'm really honored, and अच्छा लगता है कि when I discuss my practical experience, I'm more into practical knowledge because मुझे लगता है कि when you learn something inside the classroom, which is very important, but it is the practical experience that really matters. And practically अगर आप जब बाहर निकलते हो, काम करते हो, तभी आपको पता चलता है कि okay, this is how it works. And Sumedha, and to all the students and the faculty members, I want to share a very, very important news with all of you, that the World Sports Press Association has invited me to South Korea and their capital city of Seoul. And on May 7th, I will be there for the AIPS Congress. It is available on internet. What is AIPS is all about, AIPS Congress. And I have been chosen and invited to be one of the observer, and the only chosen one from India. So I shall be there. And again, I will be back by 13th of May, and I'll be able to share all my experiences, what I've learned there. And this is going to be another learning experience for me. And I always say, #learning never stops. Remember, all of you. Totally agreed, ma'am. Thank you so much on that note. And thank you to all my
Thank you so loving very much. students, and wishing you all the very best for your future. Whatever you do, जो भी आप करो ना, एक mark बना के, mark छोड़ के करना. You know, make a mark and be a brand of your own. किसी ने ऐसा किया है, मुझे ऐसा करना चाहिए. No, be yourself. Thank you. Thank you, ma'am.